In last class, we have studied Anglo-Saxon literature, page number 5, with their explanation. And today I am going to discuss page number 6 of this same chapter. So let's begin. Some 30,000 lines of Anglo-Saxon poetry have survived nearly all of its content in 4 manuscripts, and we have no reason to believe that the older non-religious poetry that survives is more than a casually preserved fragment of what was written. Specifically, religious poetry might be expected to have earned ecclesiastical care and preservation, but the heroic poetry, which connects more directly with the Germanic origins of the Anglo-Saxon, could not be expected to arouse any special ecclesiastical interest even when it had been superficially purged of its pagan feeling, and in some degree Christianity in thought. The conversion of the English people began with the arrival of Augustine in Kent in 597. He had been sent by George the Great with a band of monks in order to achieve this missionary task. But through Albert, the King of Kent, was duly converted to Christianity, and Augustine was soon able to establish the seat of his bishopric at Canterbury. The permanent establishment of Christianity throughout England proved a much lengthier task and one which required the active intervention of Celtic missionaries from Ireland and Scotland. Differences between the customs and practices of the Irish Church, which had remained somewhat isolated from Rome, and the Roman Church, which had sponsored Augustine's mission, made for certain difficulties between those English ecclesiastics who looked to Rome and those who looked to Iona and to Ireland, and these were not resolved until the Synod of Whitby in 663. But it is sufficient for the historian of literature to note that the development of English Christianity was not continuous but sporadic for the first century and more, with certain notable setbacks such as the defeat and death of the Christian Edwin, king of Northumbria, at the hands of the pagan Penda, king of Mercia, in 632, which meant the disappearance of the Christian church in Northumbria until its re-establishment by Aidan and his followers from Iona. If even the external ecclesiastical organization was thus unstable in the early centuries, it is not difficult to see how traces of pagan thought in varying kind of relation to Christianity persisted for some time after the national conversion of the English. जैसे कि आप लोग को पता है, मैंने आपको पहले बताया था पिछले क्लास में कि 4 मैन्युस्क्रिप्ट सरवाइव करते हैं एंग्लो सेक्शन पोइट्री के. सो 4 मैन्युस्क्रिप्ट्स का नाम मैं आपको बता देती हूँ. सबसे पहले है एक्स्टर बुक, और दूसरा है जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट, तीसरा है वर्सेली बुक, और चौथा है बियोवेल्फ बुक कह सकते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे बियोवुल्फ के पोयम ही कंटेन करते हैं. सो ये सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स मैंने बताया, इसके डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जाएंगे. अभी फ़िलहाल मैं आपको ये बता देती हूँ कि
जैसे कि पहले बताई थी कि बारबेरियन लोगों ने अटैक किया था रोमन पे। रोमन पहले क्रिश्चियनिटी फॉलो करता था और क्रिश्चियनिटी ही एक बेस था उन लोगों के लिए रिलीजन का। लेकिन जैसे बारबेरियन का अटैक हुआ, जो 3 मैंने आपको बताए थे ट्राइबल पीपल के बारे में, एंगल जूट्स, और आपको बताया गया था पिट्स और स्कॉट्स का भी हमला हो रहा था। एंगल, जूट और सेक्शन, ये सारे जो ट्राइब्स थे तो ये सारे बारबेरियन थे, यानी कि वो लोग कोई रिलीजन्स और कोई धर्म को नहीं मानते थे। और इस कारण से जो क्रिश्चियनिटी का प्रचार हुआ था सबसे पहली बार जो है ऑगस्टाइन लेके आए थे। इस बात को याद रखिएगा। और वो भी कहाँ लेके आए थे? कैंट में 597 AD के समय। तो इस समय से ये सारे जो है इस्टेब्लिश होने लगे क्रिश्चियनिटी में, ये लोग अपने आप को कन्वर्ट करने लगे। तो जर्मैनिक जो ओरिजिन के पीपल थे, जो एंग्लो सैक्सन पीपल थे उस समय, वो लोग किसी भी तरह के धर्म को नहीं मानते थे। और ऑगस्टाइन के अराइवल के बाद कैंट में सबसे पहले जियोफ्री द ग्रेट, इस नाम को याद रखिएगा, इसको ऑगस्टाइन को भेजने वाले यही थे, ठीक है। और बदला किसे गया था? एल्बर्ट फर्स्ट यानी किंग ऑफ कैंट को कन्वर्ट किया गया था। क्रिश्चियनिटी उन्होंने अपना लिया था, अपना स्वेच्छा से क्रिश्चियनिटी को अपनाया था। दिस लीड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी थ्रू आउट इंग्लैंड। और अब धीरे धीरे जाके इंग्लिश कल्चर और क्रिश्चियनिटी जो है वो पूरे ब्रिटेन में फैलते चली गई। और सारे जितने बारबेरियंस थे, जितने ट्राइबल पीपल्स जो वहाँ रह रहे थे, उस सब में क्रिश्चियनिटी धीरे धीरे फैलने लगी। तो इस पेज में फ़िलहाल यही है। और आप देख सकते हैं एडवर्ड किंग ऑफ नॉर्थम्बेरिया, वो भी पेगन थे उस समय, वो लोग भी धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी में आए। तो 7 किंगडम में जो बटा था ब्रिटेन, 7 किंगडम में, छोटे छोटे किंगडम्स में जो बटा था, सबसे पावरफुल वेसेक्स था। तो ये सारे 7 किंगडम्स में धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी स्प्रेड होने लगी। तो इस पेज में इतना ही है। बाकी जो भी है मैन्युस्क्रिप्ट्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में समझा दूँगी।